Almost every city has one of these. Ugly piles of garbage that sometimes look like mountains of waste. They are eyesores, smell bad, and most importantly, are major environmental hazards. These unlined and unscientifically designed landfills, typically referred to as dump sites, are the greatest challenge in the solid waste management of India. According to government data, there are more than 3,000 dump sites in India that need to be reclaimed or closed permanently. And one of the best models to remediate these dump sites can be found in Bhopal, the capital of Madhya Pradesh. Bhopal has reclaimed over 7.5 lakh tons of legacy waste in 37 acres of land, which was once a dump site for the entire city. So, how did Bhopal do it? Let's find out in this episode of The Cleanest Cities of India. Bhopal is known as the City of Lakes. It's a city steeped in heritage, a city that is a delight for food lovers. But what is little known is that Bhopal is also a city with a robust waste management system. भोपाल मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। भोपाल में जो नेचुरल स्पेसेस है जैसे ग्रीनरी है या तालाब है, अन्य स्पेसेस है, हमेशा लोग माने स्वच्छता के प्रति जागरूक रहे, इसीलिए ये सब इतने अच्छे मेंटेन्ड है, मैनेज्ड है। But this city, which generates around 800 tons of municipal solid waste every day, was not clean like it is today. Till 2017, Bhopal did not segregate its waste. This unsegregated waste used to end up at a 37-acre dump site at a place called Bhanpur Khanti. This dump site has been in existence for more than 30 years and has accumulated over 7.5 lakh tons of legacy waste. As the dump site became a major environmental hazard for the people of Bhopal, the Bhopal Municipal Corporation decided to take action. भोपाल में भानपुर एक प्लेस थी जहाँ पर 30 साल के ऊपर से समय से कचरा उधर डंप किया जाता था। मिक्स्ड वेस्ट ओपन ग्राउंड पर डंप करने से उधर काफ़ी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट था और साथ में उधर के जो आसपास के जो रहवासी थे उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मिनेस भी था। और जो लोग ट्रेन से दिल्ली तरफ से भोपाल आते थे उन सब लोगों के लिए भोपाल आया इसलिए ऐसा पहचानते थे कि जब भानपुर से फॉल स्मेल होती थी उससे वो पहचान पाते थे कि भोपाल मल आ गया है। हम लोगों के लिए ये 2018 में एक बहुत बड़ा चुनौती थी, चैलेंज था कि कैसा हम इसको साइंटिफिक रूप से ट्रीट करके प्रॉपर मन उसको कैपिंग करेंगे। In 2018, BMC decided that a public-private partnership was the way to resolve the dump site problem in Bhanpur Khanti. Saurashtra Enviro Projects Private Limited, a company involved in municipal solid waste management processing, was selected as the concessionaire to carry out bioremediation. But to remediate a dump site almost 27 times that of a football field containing decades-old waste was not an easy task. नगर निगम इसको टेंडर फ्लोट किया था। ये एरिया पहले जो 37 एकड़ में फैला हुआ एरिया है, हम लोग जब इनिशियली इधर आए थे तब ये ओवरऑल एरिया में 8 मीटर 9 मीटर एवरेज हाइट में कचरा डंपिंग था। तो उसमें हम लोगों का पहला प्लानिंग ये था कि इसमें से कुछ पोर्शन हम लोग बायो माइनिंग प्रोसेस में प्रोसेसिंग करें, कुछ पोर्शन हम लोग डंप में ट्रांसफ़र करके उसको साइंटिफिकली क्लोज करें। Saurashtra began their work by pre-planning every detail of the project. BMC and the concessionaire then chose a unique hybrid model of biomining and biocapping to carry out the remediation process. Out of the 37 acres of land, 21 acres was to be recovered through biomining and the rest 16 acres was decided to be capped. तो इसमें बायो माइनिंग में जो है हम लोग पहले तो कचरे को हिप बनाते थे, उसमें कल्चर ऐड करते थे, फिर उसको 27 डेज तक हम लोग अपना फ्लोर में रखते थे, उसके बाद उसको प्रोसेस करते थे, थ्रू ट्रोमेल सेग्रीगेट करते थे डिफरेंट स्टेज में। हम लोग 3 ट्रोमेल लगाए थे, 75, उसके बाद 50 और आपका 8 mm का ट्रोमेल लगाया। उसमें कंपोस्ट उसमें इनर्ट निकलता था, RDF निकलता था और फाइनली कंपोस्ट निकलता था। RDF हम लोग वेस्ट टू एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, इनर्ट हम लोग
अपना जो एग्जिस्टिंग डंप है उधर ट्रांसफ़र करते थे, और जो खाद निकलता था वो हम लोग कुछ बैक फिलिंग के लिए यूज़ करते थे, कुछ अदर हम लोगों का जो कल्टीवेटर है वो भी लेके जाते थे, अपने हिसाब से यूज़ करते थे। A total of 1.8 lakh tons of waste was recovered using biomining. The next step was to deal with the rest of the waste by using the method of biocapping. After digging the land, a layer of high-density polythene liner was placed, over which a trapezoidal waste structure is made as part of the capping process. The waste structure is covered with geomembrane, soil, and is planted with grass to complete the process. The treatment of leachate and the gases that emerge from the dump site is also important during the capping process. तो हम लोग उसका जो लीचेट जनरेट होता है, जो कचरा होता है, कचरे का एक जूस निकलता है उसका सेल्फोइड से, तो वो लीचेट बोलते हैं उसको। तो वो लीचेट जो जनरेट होता है, वो लीचेट को हम लोग पेरिफेरियल एक पाइपलाइन इंस्टॉल करके उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करते हैं, देन उसको हम लोग LTP में ट्रीटमेंट करते हैं, लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट में। And today, after 3 years of back-breaking work, this is how Bhanpur Khanti looks. The 37 acre of land in Bhanpur has been reclaimed, and 16 acres of this has been developed into a green area. The BMC is now planning to commercially use this reclaimed land. सौराष्ट्र कंपनी के माध्यम से नगर निगम ने 52 करोड़ रुपए खर्च करके उसका रेमेडिएशन किया है, जिसमें हमको वापस 21 एकड़ लैंड मिली है और 16 एकड़ में हमने पार्क डेवलप किया है। उस टोटल 21 एकड़ लैंड की आज जो कलेक्टर गाइडलाइन है उसके हिसाब से 380 करोड़ रुपए होता है। तो इस रूप में नगर निगम को जो हमारी 37 एकड़ लैंड उस डंप साइट पे थी, उसमें से हमने पार्क बनाया, जो एक अच्छा हरियाली का, उधर का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, वहाँ का पानी का जो पोल्यूशन तो वो समाप्त हो गया, और उस रूप में नगर निगम को भी एक 380 करोड़ रुपए की लाभ भी मिला। But for Bhopal, getting rid of this eyesore was just the beginning. Today, Bhopal employs source segregation practices including door-to-door segregation. They also use GPS-based tracking technologies to ensure that waste gets collected, segregated and processed every step. Bhopal also has a scientific landfill in its outskirts at a place called Adampur. It has a central waste management system that mostly deals with unsegregated waste collected from the city's floating population, as well as some of the legacy waste. Bhopal has set a model for the rest of the country. It has shown that legacy waste in dump yards can be effectively remediated using appropriate technology solutions. It could become a model for the remediation of the 3,000 odd dump sites in cities across the country.